चंगे semolina खाए तो चंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दुआ करते हैं अल्लाह के फजल और करम से सब लोग खैर खरीद से, हम भी खैर खरीद से। आज ग्रामा मीरपुरी की किचन बन रहे हैं खजूरें। हम खजूरें बना रहे हैं, आप हमारे साथ साथ रहना। नहीं, आप नहीं बना रहे, जो बना रहे हैं उनका बताओ ना। मेरा बेटा और मेरी पोती दोनों बाप बेटी जो है ना खजूरें बना रहे हैं। जिन्होंने दुबई चॉकलेट बनाया, जिन्होंने दुबई चॉकलेट बनाया वो लोग बना रहे हैं, तो इनके साथ साथ रहना। किचन मेरी ग्रामा की किचन में साथ साथ रहना और देखना ये कैसे खजूरें बना रहे हैं। ये जो आपको दिखाएंगे ये चीज़ें, ये सब चीज़ें डालेंगे। बादाम हमने रोस्ट कर के पीसे हैं और जो है ना चारे मगज भी हमने रोस्ट कर लिए हैं। ठीक है ग्रामा, अल्लाह के वाले। अच्छा, Beautiful viewers, assalamu alaikum. Once again we come to you with a new recipe. So we're going to start here. We've got eggs, butter, green cardamom powder, sesame seeds, oil, fennel seeds, got almonds which we've roasted and grinded. We got icing sugar, plain flour, baking soda, melon seeds, which in along with the college chale mughaz, sesame, semolina. We got some sesame seeds, coconut, and milk. We will be mixing all these ingredients together to make a khajoor. So stay with us, bear with us, and we'll try our best and see how it comes out. We have 2 cups of plain flour here, which we're going to sieve. We don't really need to sieve it, but it's just to make it a bit more fluffy and give it a bit more air in the flour. So that's 2 cups of flour there. Then we're going to add we're adding 1 cup of powdered icing sugar, powdered sugar, however you want to pronounce it. Well, what's happened is my daughters and my son and my niece have been cooking in the kitchen and they've lost my cups. So now I'm going to have to use this half cup to measure a full cup. So that's 1/2. And 2 halves, which makes 1 full cup. One cup. Half a cup or 1 cup. Half. So we've got half a cup of semolina. Half a cup of semolina. And we have then how much? A quarter, no, a third. Right, we have a 1/3 cup of grated coconut. A tablespoon of melon seeds, which we've roasted to give it a better flavour. Right,
Right, we have a 1/4 cup of white sesame seeds here. That goes in as well. Right, 2 tablespoons of fennel powder, which we call saumph. Teaspoon or tablespoon? Or teaspoon, sorry. Teaspoon. So 1, 2. You know, desi style. Right, 1 teaspoon of cardamom powder. Right, this will give it a nice taste and it'll give you a beautiful smell as well. So 1 teaspoon of this. And right, basically we have to put 1 pinch of baking soda. Now, which is about that much, a pinch of baking soda. Right, we're going to put 2 tablespoons of roasted almonds, and then we've grinded them, so they're lovely and grinded. So we put that in as well. And next we're going to add a 1/3 cup of oil. And I washed my hands earlier, so now we're going to start mixing them. Mix all these ingredients together. I think we're going to need a bigger bowl. So let's swap over to a bigger bowl. Right, we've had to change our bowl because that was too small. So we've done that. Now we're adding 1/2 cup of milk. And 2 teaspoons of water. We're going to dough all this together to make it a nice little dough. Right, when you knead it all up and it looks like this is the consistency it needs to be at. When you've got it like this, then you leave it to sit for a bit. Give it about 1/2 an hour, 20 minutes to set, and then we'll come back to it. Right, so basically after kneading it, doughing it and all that, when it's ready, make it into a bowl, and you've got to leave it to sit for about 15-20 minutes. Now, to prevent it from letting a skin or getting hard on top and not being able to use it, you add a bit of oil onto it to keep it moist whilst you leave it to get set basically. So
we'll put, as you can see, a thin layer of oil on it, so it's nice and moist when we come back to it. And we will see you in 15 to 20 minutes time. It's been 20 minutes since we set the dough. It's lovely and tender now, perfect to make the shapes of the dough. So we're going to take a bit, roll it up in our hands first. Then we're going to use a bread tray to give it some shape. As you can see here, it's got a lovely shape and texture as well. So we're going to do this with the rest of the dough. You don't want them too thick, so you've got to have sort of a consistency. Roll them out a little bit, then use the edge of the, we call it a changir, people have different names for it, and then you just roll them out. Right. You make some balls, you know, so we have a bit of a same shape. Right, we've moulded them and shaped them all. We've broken a little bit of tradition and we've made our own shapes. So we've got some love hearts, butterfly, stars, love heart, moons, stars. So we've gave it some different shapes. Now let's see how they turn out. You've got to have, the oil's got to be barely warm. If it's too hot, they burn from the outside and they don't cook from the inside, so you've got to have it at a very low heat to give it time to cook. Right, here's the ones that we put in first, the lovely and golden and ready. So we've took them out and let them drain a little bit, right, and then we're gonna call Grandma in to taste them. So here we go. We're gonna put them on this plate here.
Right, we're going to coat these with a bit of icing sugar to give it a nice presentation. As you can see, golden brown with a lovely coating of white. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खजूरें ब्राउन हो चुकी हैं, अब मैं निकाल रही हूँ। मेरा बेटा बना रहा था, उसको कुछ काम पड़ गया, वो उधर चला गया। कहता मम्मी आप देख लेना, तो मैं ये निकाल रही हूँ अभी। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन गई है ये। आप लोग भी बनाना घर में, चाय के साथ खाना, चाय बनाना कप, और साथ में ये रखना टेबल के ऊपर, बैठ के रिलैक्स होके खाना। बहुत मज़े की और बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तितली बनाई है, तितली। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो स्टार, ये दिल, ये मून। बहुत नाइस बने हैं माशाल्लाह। आप भी ज़रूर बनाना इस रेसिपी को, बना के खाना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसी बनी है। बहुत बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह। ये सब मैंने डाल दिए हैं, जब ये बनेंगे ना फिर निकाल के आपको दिखाएंगे कि देखो ये कैसे बने हैं। इनको ऐसे रखें, खुले खुले, जुड़े नहीं, ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो बहुत अच्छे तरीके से बन चुके हैं। अभी हम निकाल रहे हैं इनको। देखो कितने बेहतरीन ये बने हैं सब। सब हमने निकाल लिए हैं, आज पहली बार बनाए हैं। देखो कितने बेहतरीन बने हैं। बहुत अच्छी रेसिपी बन गई है। मेरी रेसिपी ज़रूर बनाना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में बताना कमेंट करके कैसे लगा। बेल आइटम ज़रूर दबाना। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी मेरा सलाम, जो नए आने वाले हैं उनको भी मेरा सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अभी इधर ये देखा कैसे क्रिप्सी, देखो कैसे आवाज़ कर रही है, कैसी बनी। बहुत क्रिप्सी और मज़ेदार सी बन गई है ये। मैं प्लेटर में डाल रही हूँ। अभी वो चंद तारे भी निकलेंगे, वो भी डालूँगी। बहुत गर्म है, हाथ नहीं लग रहा। बहुत मज़े के हैं। मेरे पोते ने टेस्ट किए हैं तो कहता है बहुत मज़े के हैं बीजी, बहुत अच्छी बने हैं माशाल्लाह। देखो उधर दूसरे वाले भी रखेंगे, इधर ये भी डाल रहे हैं हम। ये सब हमने निकाल लिए, तो दूसरे बनेंगे फिर वो भी निकालते हुए दिखाएंगे।